आफ्टरनून एवरीवन। आज हम वोकेशनल एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो चैप्टर एक है उसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। Electricity has an important place in modern society. In this age, almost all the appliances we use work on electricity. Even the automobile industry has started an electric car which will run on electricity instead of fuel. When power supply in a city breaks down, hospitals, hostels, office buildings, schools, food storage plants, banks and shops stop working. Electricity makes no sound, does not have an odor and cannot be seen. Learning the theory of electricity makes us question about the hazards associated with electric appliances. Therefore, it is very important to understand the concept of electricity for installation. For installation and troubleshooting electric appliances. The electric element in the appliances including controlled and uncontrolled source of energy. Controlled and uncontrolled source of energy. The electric elements in the appliances include uncontrolled source of energy, resistors, capacitors, indicators. So there is, I show you picture of resistors. Give me a moment. Registers image. Register image. So this is the Gemini tool who create images. So we are here, resistors, capacitor and inductors. So this is all. Let's choose the one and this black, this is registers and
capacitors, inductors, capacitors, this is capacitors, resistors, capacitors, inductors, that is inductors, like this is. Let's carry on. The electric circuit should be designed correctly to perform a specific function. Analysis of electric circuits refer to computation requirement required to determination the unknown quantities such as voltage, current, and power associated with one or more elements in circuit. To work in an area of electrical or electronics engineering, a person should have the basic knowledge of electrical and electronic circuit analysis and laws. देखो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के फील्ड में कार्य करना है तो उसे जो सामान्य सर्किट होते हैं वो कैसे काम करते हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक एलईडी टीवी हो गया, रेडियो हो गया, स्मार्टफोन हो गया, उनमें डिफरेंट टाइप के मदर बोर्ड्स होते हैं, उनका डिफरेंट सर्किट होता है, तो उनको एनालाइज करना, हाउ दे वर्क, उनको समझना। और इलेक्ट्रिकल में ट्रांसफार्मर, कैसे डीसी वोल्टेज को घरों में ट्रांसफ़र किया जाता है थ्रू ट्रांसफार्मर, कैसे ट्रांसमिशन लाइंस काम करती हैं। सो systems such as mechanical, hydraulic, thermal, magnetic, and power are easy to analyze and model by a circuit. To learn how to analyze the models of these systems, first one needs to learn the techniques of circuit analysis. To learn how to analyze the models of this system, first one need to learn the techniques of circuit analysis. We shall briefly discuss some of the basic circuit elements and the laws that will help us to develop the background of this subject. In this chapter, student will understand the basic concept of electricity and electric circuit. Student can apply their knowledge to design and demonstrate their own circuit. So let us understand this picture. In this figure, various driving forces on the earth, like this is the earth पे कौन कौन सी जो है एनर्जी फॉर्म्स है। फर्स्ट है यहाँ पे दिखाया गया है सोलर एनर्जी, सूर्य से प्राप्त होती हैं। हाइडल एनर्जी थ्रू नदियों से प्राप्त होती है, समुद्र से। ग्रेविटेशनल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी रेडियो एक्टिव पदार्थों से प्राप्त होती है, यूरेनियम, थोरियम। थर्मल एनर्जी हमें कोयले से, और विंड एनर्जी हमें जहाँ पर तेज गति से हवाएं चलती है, विंड टर्बाइन से। सो ये ड्राइविंग फोर्सेस ऑन द अर्थ।
Electricity is a set of physical phenomena associated with the presence and flow of electric charge. Electricity gives a wide variety of effects such as lightning, static electricity, electromagnetic induction. There are such terms: lightning, बिजली का कड़कना; static electricity. Let us search what is static electricity. Static elect simple language. Unlike the electricity that flows through wires to turn on your light, static electricity stays on the surface of an object until it finds a way to jump somewhere else. ऐसी बिजली जो एक जगह टिकी या रुकी रहती है, तारों में बहती नहीं है। सरल शब्दों में, जब दो चीज़ें आपस में रगड़ती है तो उनके बीच छोटे छोटे कण इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो जाते हैं। इसे एक चीज़ पर चार्ज जमा हो जाता है। जब यह चार्ज बहता नहीं, इसे स्थिर विद्युत कहते हैं। ये कैसे काम करती है? दुनिया की हर चीज़ छोटे परमाणु एटम से बनती है। इनमें दो तरह के चार्ज होते हैं: पॉजिटिव जो हिलते नहीं है, नेगेटिव जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यह एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर जा सकते हैं। जब आप दो वस्तु को रगड़ते, जैसे बालों पर कंघी, तो कुछ इलेक्ट्रॉन एक से निकलकर दूसरे पर चले जाते हैं। इससे एक नेगेटिव और दूसरी ओर पॉजिटिव हो जाते, क्योंकि विपरीत चार्ज एक दूसरे को खींचते हैं। हमने जाना स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन हिंदी। In addition, electricity permits the creation and reception of electromagnetic radiation, such as radio waves. Electrical energy can be easily transferred from one location to another with minimum loss. Sources of electricity. Energy is the driving force for the universe, where energy is present in different forms as shown in Fig 1.1. In our planet, energy is present in the form of tidal, wind, solar and thermal energy. These forms of energy can be used to generate electricity. Thunderstorm and lightning is an example of naturally generated electricity. Energy transformation. According to the law of conservation of energy, energy can neither be created or nor destroyed. It can only change its form. One form of energy can be transferred to another form. Electrical energy can be generated by transforming several types of energy. Nuclear energy to electrical energy,
chemical energy to electrical energy, hydel energy to electrical energy, and thermal energy to electrical energy, solar energy to electrical energy, wind energy to electrical energy. For example, 1.4a and 1.4b show how electrical energy can be generated from different sources. This generated electrical energy can be transferred from one place to another using a transmission tower. A typical transmission tower is shown in Fig 1.3. That is the transmission tower and high voltage transmission lines. So there are types of trans. We have to search types of transmission tower, types of electricity transmission tower.